होती है. So there is an article regarding it, NDR status code. You will find multiples regarding it. So a key piece of information in this section is enhanced status code, which I already mentioned. The enhanced status code is returned by the server that generated the NDR. Same way जो generating server करी है. The source server that could not deliver the message or the destination server that rejected the message. The enhanced status code determines the text that display in the user information. The code value is not altered by exchange. आप ये नीचे देखो, the following information is also available in the section: generating server, remote server, original message header, the rejected recipient, enhanced status code. मैंने कहा था ना कि header भी होगा, कोड भी होगा, recipient भी होगा, generating server भी होगा, remote server भी होगा. सारे मतलब NDR में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर आपको जानना हो तो कि कैसे होते हैं. बट ये है सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच RFC 3463 के थ्रू हमने डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या कैटेगरीज होती है यूजिंग द सिंटैक्स लाइक क्लास, सब्जेक्ट, डिटेल्स. Number 4 indicates a temporary delivery error. 5 indicates a permanent delivery error. Class के हिसाब से the RFC categorize the values like addressing, mailbox, mail system, networking, routing, mail delivery protocol, and security and policy. उसके बाद इनकी 3-digit number further classifies the errors. और भी classifies करने के लिए इसकी 3-digit number की errors आती है like 517 usually या 555 ऐसा. अब एग्जाम्पल शुरुआत की, ये कोड तो नंबर 441 है, इसके बाद लास्ट की और 3-digit नंबर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है क्या होता है. 441 एग्जाम्पल ये है कि कनेक्शन टाइम आउट, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है. 447 मैसेज डिले, 510 5.1.0 सेंडर डिनाइड, ये सारे एग्जाम्पल्स है. इतने में NDR बेसिक इंफॉर्मेशन अगर किसी को समझना है कि NDR क्यों जरूरत होती है, इतने में हमें पता चल जाता है, क्योंकि इसमें हमें जनरेटिंग सर्वर के बारे में पता चलता है, हमें रिमोट सर्वर के बारे में पता चल जाता है, हेडर के बारे में सब पता चल जाता है, रिसिपिएंट के इंफॉर्मेशन, स्टेटस कोड देती है कि क्या कोड की वजह से है और क्या एरर आ रहा है बोल के भी. जस्ट स्टेटस कोड नहीं देती है कि 55.0 ने, उसके आगे भी लिखता है कि ये सेंडर ने रिजेक्ट किया है बोल के भी लिखा आता है, अगर आप लोग ने देखा होगा तो इतने में ही NDR खत्म हो जाता है. बहुत छोटा सा है NDR. तो डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल. तो व्हाट इज DKIM? तो DKIM एक ईमेल ऑथेंटिकेशन है टू डिटेक्ट ईमेल स्पूफिंग. तो एक्चुअली जो रिसीवर होती है ना, उसको एक कैपेबिलिटी देती है कि टू चेक कि कोई स्पेसिफाइड डोमेन क्या बोलते हैं वो ऑथराइज है कि नहीं बोल के. तो इन सिंपल हिंदी वही है कि आप ये कि DKIM ये होते हैं कि आपको ये मतलब एक कैपेबिलिटी दिया जाता है कि आप चेक कर सकते हैं जो सेंडर डोमेन है वो सही सेंडर है कि नहीं है. लाइक फिशिंग मेल तो नहीं है, वो यूजर कैन गेट टू नो, राइट? या तो मतलब इन सिंपल टर्म्स में कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए. यूजुअली अगर हार्ड टर्म बोला जाएगा तो यूजुअली फ्लक्चुएट हो जाता है. So DKIM is an email authentication method designed to detect email spoofing. It allows the receiver to check that an email claimed to have come from a specific domain was indeed authorized by the owner of that domain. It is intended to prevent forward sender address in emails, techniques often used in phishing and email spam. जो आप कह रहे थे. In technical terms, DKIM let a domain associate its name with an email message by affixing a digital signature. ये अपनी एक digital signature कर देती है, and verification is carried out using the signer public key published in the DNS. A valid signature guarantees that some part of the email, possibly including attachment, have not been modified since the signature was affixed. Usually, DKIM signatures are not visible to end users, are affixed or verify the infrastructure rather than message authors and recipients. In respect, DKIM differs from end-to-end digital. हर का सेम नहीं होता है, end-to-end digital signature होती है ये. तो DKIM operations. DKIM provides two types of distinct operations: signing and verifying. Either of them can be handled by a module of mail transfer agent, which is known as MTA also.
MTA is a software that transfers electronic mail message from one computer to another using a client-server application architecture. An MTA implements both the client and the server receiving portion of the simple mail transfer protocol. Have you ever heard of what is MTA, by the way? सर सुना तो सर इसके बारे में. It's just an agent. Yeah, agent, right. It's just a mail transfer agent ही है, जो वो एक agent होता है mail transfer करने के लिए, both from the sender and the receiving. क्योंकि वो एजेंट के बिना किसी को पता नहीं चलता है कि मैं रिसीव कर रहा हूँ कि सेंडर कर रहा हूँ, मैं रिसीव करना है कि नहीं करना, वो एजेंट का काम होता है कि मैं रिसीव करूंगा. Signing modules insert one or more DKIM signatures, header fields, possibly on behalf of the author. Author मतलब कि जैसे हमने DKIM साइन किया, आपने सेंड किया, पर उसकी जो मेन डोमेन होती है वो हमेशा ऑफिस 365 में खुद के साथ नहीं होती है, वो रजिस्टर होती है DNS रजिस्टर में. तो इसके वजह से हमें DKIM उसकी की हमेशा DNS रजिस्टर में रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि जब हम चेक करेंगे अच्छा ये इसी डोमेन ने भेजा है और उसकी की है, तभी वो वेरीफाइड होती है. इसलिए ऑन बिहाफ इसलिए बोलते हैं बार बार, क्योंकि ऑफिस 365 डजंट ओन द डोमेन. DNS रजिस्टर इज द वन हु ओन्स द डोमेन. वी आर जस्ट परचेजिंग इट. लाइक अगर आप कोई भी डोमेन खरीदते हो तो आप परचेज करते हो 1 साल या 2 साल के लिए, आपने कभी ऑन नहीं किया होता है. वो DNS रजिस्टर के पास होती है कि हमने ऑन किया, हमने इसको लीज पे दिया हुआ है. इफ यू रिमेम्बर एन इंसिडेंट कि एक बंदे ने google.com खरीद लिया था. Have you ever heard about the incident कि google.com भी किसी ने खरीद लिया था? Yes, basically they forgot to renew the domain, right? So that is what for some time. So that is why DNS जो डोमेन होती है ना, it's never कि you can purchase it. It always in a leash. इनकी मेन ओनर होते हैं DNS रजिस्ट्रार, just like GoDaddy, from where you purchase it. So that is why it always say when sender domains is sending on behalf, whether it is an authorized domain or not. तो वो on behalf इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो DNS रजिस्टर है वहां पे वो चेक करती है कि भाई ये सही बंदा है कि नहीं, इसलिए बार बार ऑन बिहाफ बोल रहा है. कंफ्यूज मत होना है कि ये तो सेम डोमेन है, क्यों ऑन बिहाफ बोल रहा है. The signing modules insert one and more DKIM signature header fields, possibly on behalf of the author of the organization or the originating service provider. अब इसकी verifying modules typically act on behalf of the receiver organization, possibly at each hop. हर हॉप होती है. अब जब जाते हो आप ईमेल भेजते हो ना, तो एक सिंगल हॉप पे नहीं जाते, देयर आर मल्टीपल हॉप्स. तो ईच हॉप पे इसकी वेरीफाइंग चलती है. Why do we need it? The example है कि spam message may claim to be a sender at example, although it is not actually from the address or domain. Spoofing बोल दो or entity, and the spammer goal is to convince the recipient to accept and to read the email. It is difficult for recipient to establish whether to trust or distrust any particular message or domain. अब हमारे जो US के बंदे होते हैं या US के बंदे ही बोल दो, उनको पता ही नहीं होता है, कोई सा भी ईमेल बोल देते हैं. यूजुअली दे गो टू द कोई सा भी अनवांटेड साइट में चला जाते हैं, वहां से ये लोग लिंक कर देते हैं अपने आप को, कोई क्लिक भी कर देता है, फिर उस बार बोलते हैं भाई मेरे को स्पैम ईमेल आ रही है, वो क्यों आ रही है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं करता है. तो इसकी वजह से टू build a better structure, DKIM was being introduced, just like SPF was being introduced in DMR. तो रिसिपिएंट को बहुत डिफिकल्ट होता है. लाइक मोस्ट ऑफ द डेज नोबडी नोज कितनी मतलब एक्सचेंज, या मैं भी अगर बोला जाऊं तो 5 साल या 6 साल पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होता है. इतने सिक्योर हुए सिक्योर, हम तो सोचते थे कि बस ईमेल भेजना है और रिसीव करना है, पर उसके पीछे क्या काम चलती है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता था. अभी भी काफी रेसिपिएंट्स हमारे कितने एंड यूजर उनको पता ही नहीं होता होगा कि क्या है ये, क्यों हेडर आ रहा है, क्यों NDR आ रहा है, पढ़ते ही नहीं होंगे. वो सीधा बोल देते होंगे अच्छा नहीं गया दोबारा ट्राई कर लेंगे. तो वही इन ऑर्डर टू एनहांस, क्योंकि एंड यूजर तो अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को इनहांस कर रहे हैं इन सिक्योरिटी में. DKIM specification allows signers to choose which header fields they sign, but the from field must be always be signed, a from address and from field.
ये हमेशा साइन होके जाती है. Given that a mail server supports the DKIM standard, when he gets an email, the mail server open on the email and look for the signature that was created by the source mail server. That should represent the domain name that appears as a part of the sender email address. And in our particular scenario, the destination mail server will look at the email signature and try to verify if the signature created by an authority who is authorized or allowed to represent the domain name, that is o365pilot.com. So it's just an example. अभी जिसका DKIM enable है और उसका जिसका DKIM, तो वो क्या करती है, अपनी DKIM signature के साथ अपनी email भेज देती है sender email address, जिसकी form address उसकी already digital signature के साथ हो जाती है. तो वो एक example देते हैं, hello I'm Susan, my email address susan@office365pilot.com. अब क्या करती है, वो DKIM सिग्नेचर होके चली जाती है, अब मेल सर्वर के पास जाती है, वो भी मेल सर्वर जिसका रिसिपिएंट का है. अब रिसिपिएंट क्या करती है कि वो रिसिपिएंट वेरीफाई करती है कि ये डोमेन की है कि नहीं. तो उस डोमेन की वो डोमेन नेम से जाके वो DNS रजिस्टर में जाके देखती है कि उसकी की है कि नहीं है, पब्लिक की, सो दैट वो सिग्नेचर को क्या बोलते हैं, ओपन कर सके. So this is मतलब ये बेसिक एग्जांपल है हाउ DKIM वर्क्स. अगर आपको कभी DKIM का सिग्नेचर देखना है तो ऐसे होती है. तो सेलेक्टर 1 एंड DKIM में देयर आर टू सेलेक्टर, सेलेक्टर 1 एंड सेलेक्टर 2. तो अगर सेलेक्टर 1 काम नहीं करता है तो सेलेक्टर 2 अपने आप से वो स्प्लिप होके अपने आप को काम करवा देती है. इट्स ऑटो चेंजिंग. So giving the example, this is the signature how it looks. The receiving SMTP server uses the domain name and the selector to perform a DNS lookup. So when the DNS lookup take place, it goes to the DNS and tell us that the signature has been stamped with the correct authorization. So therefore this email is a legitimate email. So a verifier queries the txt resource record type of brisbane/domain key.example.net. This is just an example. कैसा दिखेगा? As you see the DKIM signature, how it looks now. A verifier queries the txt resource record type of Brisbane. Here in example.net is the author domain to be verified against in the D field. Brisbane is a selector given in the S field where domain key is a fixed part of the protocol. The data return includes the domain public key. जब वो return करती है कुछ information मिलती है, वो एक public key देती है. The receiver can use this to decrypt the hash value in the header field. At the same time recalculate the hash value for the message. क्योंकि ये सारी encrypt होती है इसलिए hash value है. And the headers and the body that was received. If the two value match, this cryptographically proves that the mail was been signed by the indicated domain and has not been tempered within transmit. So this is how it looks in Office 365, the domain key. There will be a two CNAME which need to be published in Office 365. So please have a look into it so that you can understand कैसा दिखती है ये. तो ये कुछ ऐसा होती है, सेलेक्टर 1 डॉट डोमेन की या उसकी क्विट होगी, फिर डोमेन की, फिर इनिशियल डोमेन, सेलेक्टर 2 डोमेन की, सेलेक्टर 2 डोमेन क्विट डोमेन की. उसका होस्ट नेम में सेलेक्टर 2 करके डॉट नेम और उसके बाद जो पॉइंट टू एड्रेस है और उसकी TTL वैल्यू है 3600. ये सी नेम होती है. The initial domain is the same that you sign it from the Office 365. For example, Contoso may have signed with the Contoso.onmicrosoft. Therefore, there are two CNAMEs. एक होता है Contoso-com, एक होता है Contoso.com.onmicrosoft. That is why there are two CNAMEs in there. Selector 1 and Selector 2 are two CNAMEs. Okay. Inbound DKIM. So the meaning of term inbound DKIM in Office 365 that each mail that is sent to one of the Office 365 is checked automatically by EOP, exchange owner, serving, looking for the DKIM data. In other words, the DKIM is turned on for incoming emails. तो अगर आपने अपने DKIM अपने enable नहीं किया हुआ है पर sender ने enable किया हुआ है तो वो DKIM check करेगी. So these are the scenarios, like example, like
The sender email message includes DKIM data and the DKIM verification completed successfully. In this scenario, Exchange Online read the email message, header, find the data, implements the required DKIM verification and test, and if the DKIM verification process completes successfully, Exchange Online will add this information to the original email message. The information about the successful DKIM validation test appear as DKIM is equal to pass. एक चीज याद रखना, जब DKIM पास होता है और SPF पास होता है तो DMARC ऑटोमेटिकली पास होता है. And scenario 2, the sender email message include DKIM data and the DKIM verification did not complete successfully. So in this scenario, Exchange Online read the email message header, find the DKIM data, implement the required DKIM verification and test, and if the DKIM verification process, but this time the process get failed, this time the verification process is not successfully happened. For example, the hash value that was computed by the Exchange Online is different from the hash value that appears in the email message. The information about the successful DKIM verification test appears as DKIM fail. The sender email message does not include DKIM data. In this scenario, Exchange Online read the email message but does not find any related the information about the successful DKIM none. जो अगर आपने सेंडर ने अपना DKIM एनेबल ही नहीं किया तो वो जब चेक करती है तो वो DKIM इज इक्वल टू नन बना देती है, क्योंकि कुछ उसने एनेबल ही नहीं किया तो फायदा ही क्या हुआ चेक करने का. Now the private key and the public key. The public key, as the name implies, is known to everyone. Private key is a secret key that is known only to the owner of the key pair. The private key should be kept in secure manner and be accessible only to the owner of the key pair. Versus this concept, the public key should be published so everyone will have the access to the public key and the ability to read the value of the public key. That's it for DKIM.